आशीर्वाद, इंग्लिश की तैयारी कैसी होनी चाहिए? जोरदार। इसके लिए जो क्वेश्चंस करें आप, तगड़े क्वेश्चंस करें, है ना। तो हम लोग तगड़ा क्वेश्चन करते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए हमारा ये सेशन है, वीडियो सेशन। अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। So are you yet living on the same address? It was the bills. It was the bills which are causing a headache to me. This seminar is open for all. His wish is definitely going to be fulfilled. This time. You need raise your vocabulary, your English vocabulary. If you are to clear this exam, if you are to ace this exam, are you yet living on the same address? Are you still? आपको मालूम है yet का इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस में होता है, still का इस्तेमाल इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है. So are you still living? क्या अभी भी आप रह रहे हैं at the same address? एड्रेस के लिए preposition at होता है. It was the bills which are causing a headache to me. It was the bills. जब आप emphasize करते हैं कि ये bills ही था जिसने headache create किया, सरदर्द पैदा किया. So it was the bills. और जब इस सेंस में इस्तेमाल किया जाए जहां एम्फेसाइज किया जाए तो वहां पे आप रिलेटिव प्रोनाउन के लिए दैट इस्तेमाल करें, विच नहीं. वैसे पर्सन होता तो वहां पे हु इस्तेमाल कर सकते थे, बट इफ इट्स समथिंग, व्हेन दिस इज समथिंग, वी शुड यूज दैट इंस्टेड ऑफ विच. तो विच की जगह दैट यूज करना चाहिए. सो इट वाज द बिल्स, ये बिल्स ही थे दैट वर कॉजिंग अ हेडेक टू मी, नहीं, that were causing me a headache, या that caused me a headache, जो मेरे लिए headache पैदा कर रहे थे. अब समझना ये है कि cause headache to somebody नहीं होता है, cause somebody a headache हो सकता है. This seminar is open for all. ये सेमिनार सबके लिए खुला हुआ है, तो open to all होता है. This seminar is open to all. कोई भी आदमी इसमें भाग ले सकता है, participate कर सकता है.
His wish is definitely going to be fulfilled this time. उसकी जो इच्छा है निश्चित रूप से होने वाली है, फुलफिल्ड, पूरा होने वाली है इस बार, इसमें कोई एरर नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. You need raise your English vocabulary if you are to ace this exam. You need, आपको ज़रूरत है to vocabulary बढ़ाने की, to improve your English vocabulary या to expand. raise word नहीं होगा. You need to expand your English vocabulary if you are to ace this exam. अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं, आपको इस एग्जाम को पास करना है अगर, तो आपको ज़रूरी है एक्सपैंड करना अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, बढ़ाना. He he awoke to the he awoke to find himself surrounded by armed men wearing masks. The raindrops hit the window continuously, causing a causing him to wake up. If you want to say something, just let it off your chest. He was known as a kind-hearted person. The players had gone onto the field
when it started, when it began to rain, when it began to raining. He awoke to find himself surrounded by armed men wearing masks. वो जगा to find और पाया himself अपने आप को surrounded घिरा हुआ by armed men हथियार से लैस लोग wearing masks जो मास्क पहने होते हैं उनसे घिरा हुआ पाया. It's absolutely correct. The raindrops hit the window continuously. जो raindrops थे वो hit कर रहे थे विंडो को लगातार, causing him to wake up. और उसको जगा दिया, उन्होंने उसको जगा दिया. इफ यू, इसमें भी कोई एरर नहीं है. हिट 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 तीनों फॉर्म हिट ही होता है. कॉज somebody to do something होता है. इफ यू वांट टू से समथिंग, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, जस्ट लेट इट ऑफ योर चेस्ट, तो इसको अपने उतार दो छाती से, मतलब कह डालो. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ही वाज नोन एज अ काइंड हार्टेड पर्सन. उनको जाना जाता था एक दयालु व्यक्ति के तौर पे. सो ऑल द सेंटेंसेस are correct, having no error. The players had gone onto the field. Players जो है field पे चले गए थे. When it began to raining नहीं होगा. began second form होता है began. When it began raining हो सकता था, या when it began to rain जब बरसना शुरू हो गया, है ना. began begun second form चाहिए तो began होगा. She had scarcely heard the news. Then she fainted. He was accused of eavesdropping. He was accused of eavesdropping. Are these goods to deliver to the customers today? Children must be taught about the real world issues so that they'll be ready to face them. She was 100%
100% confident that she will win. This is to be divided. This is to be divided between Ravi and I. She had scarcely heard the news. वह अभी न्यूज सुनी ही थी. स्कार्सली हार्डली के बाद व्हेन आता है. व्हेन शी फेंटेड. अभी न्यूज सुनी ही थी कि ठीक से सुनी ही थी कि फेंट हो गई. मतलब जैसे ही उसने न्यूज सुना मुरझा गई, मुरझा करके गिर गई. He was accused of eavesdropping. उस पर आरोप लगाया गया. किस चीज का? छुप छुप के बात सुनने का. That's correct. Are these goods to deliver to the customers today? क्या ये जो सामान है इन्हें डिलीवर किया जाना है? To be delivered. क्या इन्हें डिलीवर किया जाना है? To the customers. Customers को today. As children must be taught. बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए. About the real world issues. रियल वर्ल्ड इश्यूज के बारे में. रियल वर्ल्ड जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए था. हाइफन लगना चाहिए था. सो दैट ताकि दे विल बी रेडी टू फेस देम. ताकि वो तैयार हैं उन्हें फेस करने के लिए. तो रियल वर्ल्ड में हाइफन होना चाहिए. दैट्स द ओनली एरर. मतलब ये होना चाहिए था रियल वर्ल्ड ऐसा. शी वॉज 100% कॉन्फिडेंट. वो 100% विश्वास से भरी थी. दैट शी विल विन. वो जीतेगी. पास्ट की बात है ना. पास्ट से आगे विल नहीं होता है. शी वुड विन. क्यों जीतेगी. दिस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन रवि एंड आई. इसको डिवाइड किया जाना है. बिटवीन प्रपोजिशन है. प्रपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आते हैं. तो यहाँ आई नहीं मी. ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है. सो दिस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन रवि एंड मी. इसे बांटा जाना है रवि और मेरे बीच. समझ में आ रहा है? They were searching for mechanic as their car had broken up. A bunch of goons seized an arm from a gatekeeper, from a sentry, and started shooting indiscriminately.
this is seldom, this is seldom or ever happened here. Hasn't this that poor little kid could not do anything not do anything against them. This issue is going to be main in the AI summit. This is different issue altogether. They were searching for mechanic. They were searching for, वो ढूंढ रहे थे, काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिना डिटर्मिनेंट के नहीं आता है. They were searching for a mechanic. वो लोग एक मैकेनिक को ढूंढ रहे थे. As their car, क्योंकि उनकी कार had broken down, बिगड़ गई थी. ब्रेक डाउन मतलब बिगड़ जाना. A bunch of goons seized an arm. एक गुंडों का एक बंच गुच्छा जो है समूह पकड़ छीन लिया. आर्म्स प्लूरल वर्ड होता है. A gun, a weapon from a sentry. एक सेंट्री से गन ले लिए and started shooting. शूटिंग शुरू कर दिया indiscriminately, अंधाधुंध, बिना देखे धर 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 धर. This had seldom or ever happened here. देखिए क्या है, seldom और never होता है, seldom if ever होता है. तो this is seldom if ever happened here. ये कभी नहीं हुआ है यहाँ. हुआ है, has it, has this, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि seldom if ever का मतलब होता है ना के बराबर. ये ना के बराबर यहाँ हुआ है मतलब नहीं हुआ है यहाँ. has this हुआ है. तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होना चाहिए. तो hasn't this नहीं होगा, has this होगा. That poor little kid, वो बेचारा छोटा बच्चा, could not do anything, कुछ नहीं कर सका against them, उनके खिलाफ. So it's absolutely correct, no error. This issue is going to be main in the AI summit. ये issue जो है is going to be, होने वाला है, main नहीं, the main issue. This और ये इशू हटा दीजिए. दिस इज गोइंग टू बी द मेन इशू. ये मेन इशू होने वाला है इन द एआई समिट. जो एआई समिट होने वाला है उसमें, समिट मतलब सम्मेलन. दिस इज डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. डिफरेंट इशू, इशू काउंटेबल सिंगुलर नाउन बिना डिटर्मिनेंट के नहीं आएगा. यहाँ क्या होना चाहिए था, दिस इज अ डिफरेंट इशू. और ऑल टुगेदर मतलब सब साथ में, और
ऑल टुगेदर ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब होगा पूरी तरह से। दिस इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, ये पूरी तरह से एक अलग ही मसला है। तो ऑल टुगेदर जब ऐसे लिखेंगे ALTOGETHER ऑल टुगेदर, इसका मतलब होगा पूरी तरह से, कंप्लीटली। सो दिस इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, ये पूरी तरह से अलग इशू है, अलग मसला है ना, अलग मामला है। He could not help cry after watching his father work at the factory. Since we decided, yeah, we had to lie low for a year and half, since the police were looking for us. He will either be talking on the phone or watch something on the TV. All day. I or she. You or she are not above the law. I'm trying to understand. I'm trying to understand why does this happen? He could not help cry. देखिए, he could not help, या तो लिखिए but cry, वो रोने से रोक नहीं पाया अपने आप को, रो ही दिया, या he could not help crying. He could not help crying. He could not help but verb का first form, या he could not help verb का ing form. So he could not help crying, he could not help but cry.
वो रो ही पड़ा, रोने से रोक नहीं पाया अपने आप को। आफ्टर वॉचिंग हिज फादर, देख करके अपने पिता को वो काम करते हुए एट द फैक्ट्री में, है ना। we had to lie low, हमें छुप के रहना पड़ा, भूमिगत अंडरग्राउंड होना पड़ा, for a year and a half, 1.5 साल तक। since the police were looking for us, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई थी। since वाला क्लॉज पीछे नहीं आ सकता, जब भी since वाला क्लॉज एकदम शुरू में आता है, तो यहाँ since बदल दीजिए, लिख दीजिए because या as the police were looking for us, क्योंकि पुलिस हमें ढूंढ रही थी। तो 1.5 साल तक हमें भूमिगत रहना पड़ा, अंडरग्राउंड। लाई लो मतलब भूमिगत रहना। He will either be talking on the phone, या तो वह आदत है उसकी बात करता रहेगा फोन पे, और या फिर वॉच टीवी, या फिर क्या करेगा वो, टीवी देखेगा, वॉच समथिंग, या कुछ देखेगा ऑन द टीवी। ऑन टीवी होता है, द नहीं होता है। और वॉच समथिंग ऑन टीवी, या कुछ टीवी पे देखेगा ऑल डे, पूरे दिन, यही उसकी आदत है। तो उसमें वॉच समथिंग ऑन टीवी होता है, ऑन द टीवी नहीं होता है। ऑन द फोन, ओवर द फोन, ऑन द रेडियो होता है, लेकिन ऑन द टीवी नहीं होता है, ऑन टीवी होता है। यू और शी आर नॉट अबव द लॉ, और के बाद जो लगेगा ना उसके हिसाब से, यू और शी, तुम या वो, इज नॉट, शी के बाद, और के बाद जो नाउन इक्विवेलेंट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगता है। सो यू और शी इज नॉट अबव द लॉ, तुम या वो कानून के ऊपर नहीं है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की। वाई, क्यों, दिस हैपन्स, क्यों ये होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, राइट। This is the biggest lie that they spoke to us. He can understand. He can understand the language, but can't make himself understand in it. I was looking for her, but she was nowhere. But she was nowhere to find. I'm advising you three
for years. I'm advising you three for years to stop to do that. Haven't I? Have you paid the complete fee? Have you paid the complete fee? Or is there any dues? This is the biggest lie. आपको बताएं, it is या this is या that is या that was या this was के बाद अगर ऑर्डिनल नंबर आए, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आए नाउन फ्रेज के अंदर, उसके बाद जो है जो क्लॉज आएगा उस क्लॉज में परफेक्ट टेंस लगता है, परफेक्ट टेंस. सो दिस इज द बिगेस्ट लाई दैट दे स्पोक टू अस, नहीं दैट दे हैव स्पोकन, दैट दे हैव स्पोकन टू अस. सो दिस इज दैट इज इट इज दिस वाज दैट वाज के बाद अगर कोई ऐसा नाउन फ्रेज आए जिस नाउन फ्रेज में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या ऑर्डिनल नंबर आए, तो इसको फॉलो करने वाला जो क्लॉज होगा उस क्लॉज में परफेक्ट टेंस लगाएंगे. सो दिस इज द बिगेस्ट लाई दैट दे हैव स्पोकन टू अस. ये सबसे बड़ा झूठ है जो उन्होंने बोला है हमें. He can understand their language. वो समझ तो लेते हैं उनकी भाषा, but cannot make himself understood. लेकिन वो समझवा नहीं पाते, मतलब ऐसा नहीं बोलते कि वो दूसरे लोग उनकी बात समझ लें, but cannot make himself understood in it. लेकिन इस भाषा में अपने आप को समझवा नहीं पाते, मतलब ऐसा नहीं बोल पाते कि दूसरा समझ ले. देखिए क्या ना, make के साथ make yourself understood या make yourself heard, दो एक्सप्रेशंस हैं जिनका यूज होता है. तो अगर बहुत तेज बोलेंगे आप ताकि आपकी बात लोगों तक पहुंच जाए, तो आई शाउटेड लाउडली एट द पीक ऑफ माई वॉइस, एट द हाइट ऑफ माई वॉइस. आई शाउटेड एट द हाइट ऑफ माई वॉइस टू मेक माई सेल्फ हर्ड, ताकि मैं सुनवा पाऊं, मेरी बात लोग सुन सकें. उसी तरह से आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कि समझ लेते हैं लोग. इन जापानीज में इतनी जापानीज उन्हें आती है. आई वॉज लुकिंग फॉर हर, मैं ढूंढ रहा था उसको, बट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. अब ये भी एक एक्सप्रेशन होता है, एनीवेयर, नोवेयर, टू बी फाउंड, टू बी सीन, ये एक्सप्रेशंस होते हैं. नोवेयर, समवेयर, टू बी फाउंड, टू बी सीन, ये दो एक्सप्रेशंस होते हैं. सो आई वॉज लुकिंग फॉर हर, मैं ढूंढ रहा था उसको, बट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही थी. आई एम एडवाइजिंग यू 3-4 years. मैं बरसों से तुम तीनों को समझा रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ. तो ये आई हैव बीन एडवाइजिंग, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैव बीन एडवाइजिंग यू 3, तुम तीनों को, फॉर ईयर्स, कई वर्षों से, टू स्टॉप, कि रोक दो, डूइंग दैट, ये करना. देखिए अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और उसको रोकना है तो स्टॉप के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा. लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ करने के लिए रुक जाना है, जैसे आई वॉज, मान लो कहीं मैं जा रहा था, आई स्टॉप्ड टू स्मोक, मतलब मैं रुक गया स्मोक करने के लिए. अगर मैं बोलूँ आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग कर रहा था, उसको छोड़ दिया. तो स्टॉप के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आएगा, मतलब आप उस काम को कर रहे थे, छोड़ दिए उसको. और स्टॉप के बाद अगर इन्फिनिटिव आएगा, इसका मतलब है कि आप कहीं जा रहे थे, रुक गए उस काम को करने के लिए. सो
आई हैव बीन एडवाइजिंग यू थ्री, मैं तुम तीनों को एडवाइस कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ फॉर इयर्स, कई वर्षों से, टू स्टॉप डूइंग दैट, कि वो करो, उसको बंद करो, ना करो। नहीं कर रहा हूँ एडवाइस, सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन टैग। एमेंट आई कुछ नहीं होता है, आरंट आई होता है, एमेंट के जगह हम आरंट लिखते हैं, आरंट आई। नहीं समझा रहे हैं तुम्हें, एडवाइस नहीं कर रहे हैं। हैव यू पेड द कंप्लीट फी, कंप्लीट फी नहीं होता है, हैव यू पेड द फुल फी, है ना, क्या आपने पूरा फी जमा कर दिया है। और इज देयर एनी ड्यूज, अब देखिए आप, देयर के साथ वर्ब जो लगता है इसके हिसाब से लगता है, प्लुरल है तो क्या होगा, आर, और आर देयर एनी ड्यूज, या कोई ड्यूज है। हैव यू पेड द फुल फी, और आर देयर एनी ड्यूज, या कोई ड्यूज या बकाया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. Bye bye.